Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to JIV CIV Prep. So, guys, in this particular session, we are going to practice uh, MCQs and case studies based on unit number 31 from Module D INIFS, that is capital market. Okay, very interesting topic. So, with the help of lots of MCQs and case studies, we will try to revise all the concept of this particular unit as well as the other areas also, right? So what type of questions they get asked in the previous year examination as well as expected question. Okay, so we have already done with two units of module D, financial market and money market. So today we are going to talk around the capital market and stock exchanges in India. Okay, so like I hope you have gone through this particular one. No, it is not part. Earlier, it was not part of any other subject. Okay. So today we will discuss these particular areas. So let's have a quick look about the course content. So we have primary market, secondary market, foreign stock exchanges in India. Then we have financial product or instrument with secondary market, regulatory requirements specified by SEBI, commonly used terminology in capital market, type of capital issue in the primary market, again, eligibility norms. Then we have intermediaries and we have applications supported by blocked amounts, SBA, and we have QIPs, take a qualified institutional placements. Okay, so these are some areas or the subtopics which are generally part of this one. So बहुत सारे questions हम लोग इनके ऊपर आपका practice करेंगे and with the help of MCQs, we will try to cover each and every single subtopic of this particular unit as we did in our previous two session as well. All right. तो start करते हैं discussion को with very first question on your screen. So the question is related to primary and secondary marketing. So that is the very first kind of subtopic. So whenever we talk about capital market, so capital market which generally deal with long-term securities, companies or governments, they generally raise funds for long-term duration. Okay. So if we talk about the major instruments of capital market, so we have equity and debt or like the other instruments also. Okay. So like mutual funds, debentures and all. Okay. So equity, like when companies being public, they generally raise basically they generally issue shares to the public and they generally sell their ownership in that particular case. And that is kind of things where they generally sold bonds and all. Okay. But this unit is around equity things or the type of shares or the major capital market dealings and all. Okay. For that, we have dedicated one unit also. Just after that, we will discuss in that particular one. All right. So primary and secondary market. If you talk about the capital market, so capital market entirely divided between two major area. One is primary market. So primary market, which is generally known for listing process. Okay, so it is generally known for listing purposes. Okay. So where we have like listing of basically shares or bonds or we have mutual funds or the other product of this particular market, they generally get introduced through the in this particular market. And for listing processes, like we have IPO, an initial public offering, we have FPO, follow on public offer, we have new fund offer, NFO. So these are some major processes through which we generally list or introduce new securities in this particular one. In case of primary market, investors, they directly purchase securities from the owner itself. Secondary market, which is generally the other part is secondary market, which is generally known for trading. Okay, so whenever we talk about trading, it means buying and selling of securities. So trading means buy and sell of securities. Okay. So in this particular case, in secondary market, basically investors, they generally trade among themselves. Okay. So here we have a previously listed securities, those securities who generally get in this particular like securities, they usually get listed in primary market. Now the secondary market where traders or investor, they generally trade among themselves. So let's say there is an investor who purchased in this market. Now he can sell in this particular market. There are some investor who won't be able to purchase in the primary market.
they can purchase in this particular one. All right. So secondary market is all about the trading things and all. So this is the basic difference between primary and secondary. We use a demat accounts for the trading purpose, demat and trading accounts. Demat is basically dematerialization, it is equal to electronic form. So basically our depositories, they generally used to maintain securities in the electronic form, as we have NSDL and CDSL. So NSDL for NSE and CDSL for BSE. And we have lots of intermediaries like stockbrokers and all in this particular area. So this is the basic differences between these two markets. Let's come to the question. What is the key difference between primary and secondary market? तो इनमें से कौन सा statement सही है? So primary market deal with new securities, while the secondary market deal with previously issued securities. ठीक है, बिल्कुल सही है आपका. ठीक है. So key difference आपका, ठीक है, primary market is unregulated, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. Investor can only buy securities in primary market. No, they can buy and sell in both. The companies raise fund in secondary market. They generally raise funds through the primary market. Okay, so what will be your right answer for this one? A only will be correct answer for this. Okay, so primary market, where companies introduce new securities for the first time by using a different process. Like if a company, they are listing their shares in the stock exchange, so the route is IPO, initial public offering. Okay, तो first time आपका जो introduction है. If they are selling a fresh securities for the second time, already listed companies, तो उसको हम लोग आपका FPO, follow on public offer के नाम से जानते हैं. Mutual funds and bonds, they get introduced through the NFO process, new fund offer. Okay, allowing direct purchase from the issuer. Secondary market, where investors trade previously previously issued securities among themselves, right? So two major areas आपका primary and secondary. So public issue market, and it is also for the private placements. Okay, so private placement is basically, it is not part of the recognized stock exchanges, where companies, they are selling their equity or a portion of shares to some individuals, but it is not through the stock exchanges and all, but it is through the stock exchanges. Auction आपका, it is generally known as auction market, and it is also known as dealers OTC market as well for this particular private placements. All right, so primary and secondary for listing purpose or introduction purpose or for the trading purpose. All right, I hope this is clear to all of you. So the market where securities like shares, bond, mutual fund, options, futures are get listed, and secondary market, where they are generally investors, they generally trade among themselves and they buy and sell these securities. Next question. Identify the incorrect statement from the following regarding stock exchanges in India. So with the help of this particular question, we will make our understanding toward the stock exchanges in India. ठीक है, तो stock exchanges के बारे में आपका पूरा एक list complete हो जाएगा. ठीक है. So incorrect statement. You have to find out the incorrect statement. NSE was established in 1985. ठीक है, तो पहला ही statement incorrect है. It should be 1992. ठीक है. And one of the two major stock exchanges, this portion is correct, but the overall statement is wrong. ठीक है, क्योंकि आपका it is 1992. ठीक है. Metropolitan Stock Exchange of India Limited was formed in 2010 and started trading from 2011. This is true. The second statement is true. India International Exchange is a subsidiary of not NSE. It is a subsidiary of BSE. BSE is located in IFSC, GIFT City, Gandhinagar, Gujarat. So IFSC, Indian Finance, आपका that kind of universal regulators, so आपका जो होता है ना, so जहाँ पे like we have IBUs and all, they are generally part of this. तो IFSC गांधीनगर गुजरात के अंदर आपका, but it is India INX is the subsidiary of BSE, not NSE. ठीक है, so this statement is also incorrect. Over the counter exchange of India was set up in 1995. No, this is also wrong. It is 1990. ठीक है, so 1990. To help a large corporation to raise funds. It is not limited to large corporation as well. तो दोनों ही आपके गलत हैं.
Calcutta Stock Exchange was set up in 1920. No, this is also wrong. It is 1908. And continue to be a major trading stock exchange. No, आज के डेट में आपका ये almost आपका they have done with this one. ठीक है, तो इसमें कोई सही statement है भी हमारे पास? No, no. So we have to find out incorrect statement. So only correct statement is 2. That means 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. So 1, 3, 4, 5. That means option B should be right answer for this particular question. All right. तो सभी एक बार देख लीजिए. First statement was incorrect. NSE was established in 1992, not in 1985. Statement 3 आपका India INX is a subsidiary of BSE, not NSE. ठीक है. Statement 4 आपका OTCIE was set up in 1990, not in 1995. ठीक है. Aiming to help enterprising promoters, not just for the corporate houses and all. ठीक है. Statement 5 was incorrect. Calcutta Stock Exchange was set up in 1908, not in 1920, and currently inactive. Okay, so it is not active now. Okay. So only statement correct was Metropolitan Stock Exchange of India Limited was founded in December 2012 and started trading from 13. This was also incorrect or what? 12, 11. ठीक है. This is also incorrect, I guess. I just want to check this one. Okay. BSE Limited 1875, one of the oldest stock exchange in Asia. ठीक है. So आपका BSE. ठीक है. NSE was established in 1992. The Calcutta Stock Exchange has been oldest stock exchange of India. It was a set up association in 1908. Then we have Metropolitan Stock Exchange, December 2012 and February 2013. ठीक है. So Metropolitan Stock Exchange. So this was also wrong. ठीक है. तो ये जो हमारा पहला statement था ये भी आपका. ठीक है. So it is आपका this was also wrong, guys. ठीक है. तो ये भी आपका गलत था. ठीक है. 2012. It should be 2012 and आपका 2013 onwards it start working. ठीक है. So ये सारे ही statement गलत है. That means all of the above will be right answer for this particular one. I have to correct this particular one. So I just recognize that particular error. So आपका D will be right answer for this one. All are incorrect. So all are incorrect. So D will be right answer for this one. So please do remember this. It was also incorrect. So 12 and others was the point. So India International Exchange, INX. This is a subsidiary of BSE. This was correct. IFSC Gandhinagar. NSE IFSC Limited. For NSE, we have NSE IFSC Limited. So, which is GIFT City Gandhinagar. Over the counter stock exchange, it was set up in 1990. And it is 1990 only, na? This is 1990. Okay, all right. So all statements which were given in the question were wrong, and this is the right explanation. Please do remember this. So you can expect 1 marks question. अगर उसने यहाँ से question pick किया, तो they'll definitely ask for 1 question. And इसी तरीके से थोड़ा सा practice के through आप इनको याद रखेंगे. ठीक है. और confusing है, you will get confused. तो practice जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको help होगा. अगला. Which of the following statement correctly distinguish between BSE and NSE? ये क्वेश्चन आसान पड़ेगा आई होप. BSE operate electronically, both operate electronically. तो ये क्वेश्चन तो आपका BSE इलेक्ट्रॉनिक आपका फॉलो ओपन ऑक्ट्राइन नहीं. अब दोनों ही आपका क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पे है. BSE was first stock exchange in India while NSE established later. NSE was first. हाँ ये आपका BSE was first होना चाहिए था. ठीक है. BSE has a large number of listed companies. This is true. NSE has higher trading volume. 100% true. Option C. So in case of BSE, we have more than 5,000 companies are part of this particular one. They get listed. In case of NSE, we have around 2,000 plus companies. If you talk about the volume wise, जो trading आपके होते हैं उसके हिसाब से आप देखते हैं तो NSE is one of the largest stock exchange. Like even worldwide level पे भी we have it generally comes under the top 10. ठीक है. Derivative trading में आपका ये top पे रहता है. ठीक है. Only BSE is regulated by SEBI. नहीं, both are regulated by SEBI. ठीक है. C will be correct answer for this particular one. ठीक है. So Bombay Stock Exchange is one of the oldest stock exchange in Asia, 1875. NSE was founded in 1992. ठीक है.
more technology driven exchange. BSE has higher number of listed companies, almost like 5500 plus, whereas NSE has 2000 plus, but NSE dominate in term of daily volume and liquidity. Okay? Both exchanges operate electronically, and the open octroi system was phased out in 1992 itself. ठीक है, जो आपका ऑफलाइन होता था ना, आप लोगों ने देखा होगा एक्सचेंज में, मूवीज में एटलीस्ट देखा होगा, ठीक है, तो वहां पे लाइक देयर इज अ प्लेटफॉर्म, चिट के थ्रू आपका सेल्स होती थी. Both BSE and NSE are regulated by SEBI itself. All right, next one. What is the key difference between CDSL, Central Depository Security Limited, and National Securities Depository Limited dematerialization account number? ठीक है, तो NSE आपका, this is the depository for BSE, and this is the depository for NSE. Under this we have number of depository participations including your bank household. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज अराउंड दी अकाउंट नंबर्स. आपका अकाउंट नंबर्स जो इनके जो डीमैट अकाउंट्स होते हैं उनमें, इन केस ऑफ एनएससी व्हाट यू विल सी, आपका देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 16 डिजिट नंबर. इन केस ऑफ आपका आप सॉरी CDSL, in case of NSDL you will find IN then 14 digit. ठीक है, in case of the CDSL it was 16 digit. ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो मेजर डिफरेंस रहता है. अदरवाइज लाइक एक्टिविटी वाइज बोथ आर सेम. ठीक है, सो CDSL अकाउंट 14 digit with NSDL 18. आपका अकाउंट हैव 86. नो, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, NSDL account have IN followed by 14 digit, true, while CDSL account have 16 numericals. ठीक है, तो this is the major distinction. अगर आप दोनों के ही, अगर आपका डीमेट अकाउंट होगा किसी NSDL या CDSL या दोनों के साथ आपके जो ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू, so you'll see this particular difference. Otherwise like both are same. ठीक है, so there are two depositories which are functional in India. One is NSDL, ठीक है, National Securities Depository Limited, and CDSL, Central Securities Depository Limited. While various depository participants linked to each one of them, all the detail in the form of electronic record of equity and debt are kept in. NSDL was established in 1996, promoted by Industrial Development Bank of India, UTI, and the NSC. CDSL was established in the 1999, has opened promoted by BSE jointly with leading banks. There is a difference between CDSL and NSDL dematerialized account numbers. While the dematerialized account with CDSL have straightforward 16 numerical digit, in case of NSDL, it is 2 alpha. It is a kind of alphanumeric. So first two digit IN, then 16 numericals digit. Okay, so this is the major difference in their accounts. Next one, in the context of company's liquidation, which of the following shareholders is paid last? Okay, last में आपका, ठीक है, if any company who is facing some sort of liquidation or that is generally known as winding up process. ठीक है, so in that particular case, first companies they have to pay off their primary debt. ठीक है, then it comes to the secondary. ठीक है, तो अब अगर primary और secondary को, primary debt is like आपका bank loan and all these kind of things, even the salaries or the dues on that particular company. Then आपका even primary debt also include the bonds and all, जो secured bonds. Then it comes to the secondary, like we have bonds which are generally known as subordinated bonds. So they get secondary preference and all. And out of all these, there is one share type which is generally known as equity shares. Because whenever you make differences between equity and preference shares, so at the time of the liquidation, preference shares holders they generally get preferred over equity shares. ठीक है, तो secured creditors, debentures, equity shares and this. तो सबसे लास्ट में इनमें से कौन सा आएगा? ठीक है, in this particular liquidation process, C will be right answer for this one. ठीक है, so secured creditor first priority, then unsecured bondholders, then preference shares, and then it comes to the आपका equity shareholders. ठीक है, so we have two type of shares which we have discussed in detail in our classes. One is shares, like one is equity shares, another one is preference shares. In case of equity shares, they generally have a right to vote.
right to vote. So first one, ठीक है, the major, and in case of preference shareholders, they have a right to dividend. ठीक है, so right to dividend, इनके आपका जो लाभांश है डिविडेंड वो फिक्स रहता है, एंड दे गेट प्रीफर्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. ठीक है, जैसे अभी हमने आपका जो क्वेश्चन में डिस्कशन किया. ठीक है, सो दीज टू प्रेफरेंसेस ओवर इक्विटी शेयर्स. ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ओवरऑल कंपनी वाइज हम लोग बात करें. ठीक है, इफ यू डिफरेंशिएट दीज टू, ठीक है, सो preference shareholders get preferred over equity shareholders in term of dividend as well as आपका liquidation. ठीक है, so if you study the section 44 of Companies Act, so where we have this particular classification, section 43, as per that particular one, equity shares can be have two type. One is equity shares with the voting right only, another one is equity shares with differentiated right like voting right, dividend rights and all. ठीक है, preference shares आपका, these are shares, they generally belongs to the closed group of the investors, and they have two major rights. These are the two major rights. Apart from that, they have so many term and conditions. On the basis of that particular one, they can be further categorized among 8 types. Okay, like cumulative, non-cumulative, redeemable, irredeemable. We have participative, non-participative, convertible, non-convertible. Okay, so we will discuss these particular one also. So there is a quick look here. So equity, in the ownership of interest in a company. ठीक है, so they are kind of a owner of that particular company, also known as common shares. ठीक है, equity shares आपका, ठीक है, और equity means this. ठीक है, equity is kind of a part of ownership. ठीक है, so like क्या होता है ना, जैसे if there is a company who is coming with IPO, that means they are selling some part of their ownership to the public or common public in the form of shares. ठीक है, so let's say you own a company, XYZ company, by 100%. Now you are being public, that means you are selling some portion to the public in the form of shares. Okay? Usually companies, like when you'll come to the joint ventures, when you study that particular one, okay? So companies, like why companies come up with IPO or this public issue and all, because they are the core investors, those who generally funded that particular company at the beginning or the early stage of that particular one, they are pulling their money back. Okay? So basically they are making their money, and now they are generally sharing some ownership with the common people, and basically they are, we can say कि जो initial पैसा उन्होंने लगाया था उसको निकाल करके they want to be secure, and now they are doing that particular company public, right? So equity shares, and equity shares is commonly referred to as ordinary share. It represent the common of functional ownership in which shareholders have a fractional owners. मतलब जितने भी उनके पास shares हैं, entrepreneur risk, like if company will do good, so that means अगर उनके revenues numbers बढ़ेंगे, market share बढ़ेगा, तो their share price will also go up. If company's market share will come down, so their share prices will also come down. ठीक है, so they have आपका the company have voting right. ठीक है, और company may issue such shares and differential right like voting, payment of dividend and all. Section 43 ये हमने AFM में पढ़ा हुआ है. ठीक है, right issue of shares, right issue is totally a different thing. Okay? So it is done by the listed companies when they generally provide some sort of discount to their existing shareholders. This we have already discussed. Okay? Bonus share, it is simply known as conversion of reserve and surplus into equity. ठीक है, तो जो कंपनी के पास जो रिजर्व सरप्लस है उनको क्या कर रहे होते हैं, they are converting into equity and they are allotting to their existing shareholders for free. ठीक है, यहाँ ये डिस्काउंट में इशू होते हैं, ये आपका फ्री में होंगे. ठीक है, तो ये हमने आपका बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं AFM के अंदर. आई होप यू गाइज रिमेंबर दोस पर्टिकुलर वन. Which of the following is not be considered a distinguished characteristics of equity shares? तो इस equity share के संबंध में कौन सा statement incorrect है? The right to vote of company decision, the assurance of receiving dividend every financial year, no. This belongs to आपका your preference shares. The ability to receive portion of company's residual profit, it can be. Higher risk compared to preference shares. आपका क्या था क्वेश्चन? Which of the following is not be considered distinguishing characteristics of equity shares along with the आपका preference shares? Right to vote,
in the company's decision, ठीक है, assured not be considered distinguishing characteristics. The assurance of receiving dividend every financial year, no. Okay, so the ability of receive, so B should be right answer for this one. Okay, so B आपका बिल्कुल clear cut है, that belongs to the preference shares. Okay. So unlike preference shares which have a fixed dividend payout, equity shares do not guarantee dividends. Okay. It totally depend on the company's management. Sometimes companies like equity shareholders, they also get the dividend. It is totally decided by the management. ओके सो वहां पे कोई फिक्स आपका ऐसा डील नहीं है. इफ कंपनी इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सरप्लस, काफी अच्छा प्रॉफिट वो बना रही है, तो कंपनीज दे जनरली शेयर अ पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट विद देयर आपका जो कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके साथ भी, ठीक है. बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे डू हैव सम कंडीशंस कि लाइक व्हाट एवर प्रॉफिट दे मेड उसका 5%, 8%, 10%, वॉट एवर द डील इज, they'll share among the preference shareholders. Dividend is basically it is linked with the profit. It is a part of profit, right? लाभ का अंश. Dividend payment to equity shareholders depend on company's profitability and board decisions. Equity shares offer ownership and voting right, but they come with higher risk compared to preference shares. अगला, what is the maximum tenure for which a company can issue redeemable preference shares except for infrastructure project? So it is 15 years. Sorry, 20 years. Sorry, my bad guys, I just missed this particular one. So 20 years. So irredeemable आपका, so ऐसे point ना बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है. So redeemable आपका preference shares, ठीक है, which can be redeemed, ठीक है, means आपका redeemable, irredeemable, right belongs to the company, ठीक है. So जैसे अगर आप preference shares को पढ़ेंगे, so we have so many types of preference shares, ठीक है. तो जिसमें आपका redeemable और irredeemable एक type आपका आता है, ठीक है. How this is different from the common preference shares, ठीक है. तो redeemable में जैसे there is a XYZ company who come up with preference shares, ठीक है. Like let's say they issued some preference shares, and these preference shares are supposed that redeemable. So company they have right in this particular case कि after a certain time duration, ठीक है. So first of all the question is these shares can be issued for maximum tenure of 20 years. So let's say these shares, the company XYZ, they generally issued these particular one for 20 years, and they have kept one right कि company have a right after 5 years if they wish or if they want they can redeem those particular shares. Redeem means they have a right to buy back, ठीक है. तो कंपनी के पास यहाँ पे क्या राइट है आपका कि अगर उनके पास सरप्लस फंड्स होता है, ठीक है, if they want to return the investors money, so उन्होंने एक कंडीशन दिया कि 5 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद एनी टाइम दे कैन return the money of the investor. That is, in case of redeemable shares, this right belongs to आपका not buyback, it is sellback. Sorry, आज क्या हो रहा है, ठीक है, sellback to the आपका 10, ठीक है, सॉरी बायबैक ही होगा, ठीक है, इट इज बायबैक ओनली, ठीक है. चलो तो देखो क्या हो रहा है कि सिंपली आपका कि कंपनी ने 20 साल के लिए रिडीमेबल शेयर इश्यू करे एंड दे हैव केप्ट वन राइट कि 5 साल के बाद अगर वो चाहें तो अपने शेयर्स को वापस कर सकते हैं, इन्वेस्टर का पैसा वापस कर देंगे. दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल शेयर्स. ये रिडीमेबल, ठीक है, दे कैन बी इशूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 years. इररिडीमेबल अगर होगा तो कंपनी विल नॉट हैव दैट पर्टिकुलर राइट. इनका जस्ट अपोजिट इज कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल. इन केस ऑफ कन्वर्टेबल शेयर्स दैट राइट बिलोंग्स टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है. वो चाहें तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन दे कैन कन्वर्ट these preference share into equity shares and they can liquidate those particular one, ठीक है. So a company can issue redeemable preference shares with a tenure of up to 20 years except in case of infrastructure project where the tenure can be longer from this particular one, ठीक है. So now this chart is very important, though we have already discussed आपका type of preference shares in our AFM सब्जेक्ट मॉड्यूल बी कंपनी अकाउंट 1, ठीक है. आई होप आपको ये चीजें याद होंगी, तो इसीलिए मैं इतना यहाँ डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने इनको बहुत ही अच्छे से वहां पे आपका प्रैक्टिस किया और डिस्कस भी किया हुआ, ठीक है. सो प्रीफर्ड स्टॉक और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, दीज आर द शेयर्स डू नॉट ऑफर वोटिंग राइट. ओनर ऑफ दीज शेयर्स are entitled of fixed dividend or a dividend calculated at a fixed rate to be paid regularly before any dividend can be paid in respect of equity shares. These shareholders also enjoy priority over the equity shareholders
in the payment of surplus during the process of liquidation of the company. In the event of liquidation, their claim rank below the claim of company's creditors, bond holders, debentures holders and all, means primary debt. Again, उससे नीचे रहेगा, but equity or preference में they'll get preferred, right? So, but above the equity shareholders, a company can issue redeemable preference shares for a tenure of 20 years, except infrastructure project. This was the point जहाँ से question था, again. So we have आपका cumulative and non-cumulative. Cumulative is kind of like if investor have missed dividend in past, so they'll get added with the coming years. ठीक है, मतलब जैसे 2021 के अंदर डिविडेंड इशू हुआ, नहीं किया गया, 22 में नहीं किया गया, ठीक है, 25 आपका when the year company is distributing the dividend, ठीक है, so they'll also credited the dividend for the year 21 and 22. ठीक है, इस तरीके से cumulative. In case of non-cumulative, they'll get for only that year, that is 25. ठीक है, so this is a type of preference shares on which dividend accumulates if remain unpaid in the past years. All area preference dividend have to be paid out before paying dividend on the equity shares. ठीक है, non-cumulative आपका then we have non-cumulative is just opposite of this. ठीक है, convertible preference shares, which can be preference shares, the dividend payables on the same accumulates is not, if not paid after a specified date, share will be converted into equity capital of the company. ठीक है, पार्टिसिपेटिंग आपका पार्टिसिपेटिंग इज काइंड ऑफ अ कंडीशन. ठीक है, हमने बहुत सारे इसको डिटेल में डिस्कस किया था. ठीक है, कि लेट्स से एक कंपनी जिसने आपका किया कि दे कम अप विद देयर प्रेफरेंस शेयर्स, दे गिव वन ऑफर, फर्स्ट ऑफर प्राइमरी ऑफर कि वी विल distribute 10% of our overall profit among our प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स. ठीक है, उन्होंने बोला जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका 10% हम आपको देंगे. अब दे कम अप विद वन राइडर ऑल्सो, एक कंडीशन उन्होंने और ऐड किया, if our company will made profit more than 10 crores or more than a certain amount, ठीक है, we will give you 2% additional dividend if you pay us this much of extra as of now. ठीक है, so we can have two type of person. One is who is going with the that core plus आपका rider, ठीक है, participating. Those who are going sticking to the प्राइमरी वन कि हमें आपके प्रॉफिट से या नहीं है, जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% दो, सिंपल सा. ठीक है, हमें 2% एडिशनल नहीं चाहिए, तो दे आर जनरली नोन एज नॉन पार्टिसिपेटिंग. ठीक है, सो दिस रेफर टू राइट सर्टेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट आफ्टर अ स्पेसिफाइड फिक्स्ड डिविडेंड contracted for is paid. ठीक है, participation right is linked with the quantum of dividend paid on the equity shares over and above a particular specified level as I decided for our company is 10 crore. तो 10 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट होगा, let's say प्रॉफिट वाज 12 करोड़, तो 2 करोड़ रुपए आपका एडिशनल है, इस पे इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल गेट 12% डिविडेंड, और 10 करोड़ के लिए यू विल गेट ओनली आपका जो भी आपका डिसाइड किया गया 10% या जो भी बेस आपका है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स which cannot be converted, right? So redeemable or irredeemable right belongs to the company, but agar wo redeemable rights belongs to buyback, it is equal to buyback. So in this particular case company cannot buy back those particular type of preference shares. A company issue shares that must be purchased after 10 years. The shareholders has the right to convert their shares into equity after a fixed period. This is convertible. The company cannot repurchase these shares as long as it remain operational. So C आपका, the shareholder has no right to claim past unpaid. It is non-cumulative. ठीक है, तो आपका C will be right answer for this particular one. AFM में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, जिन्होंने देखा होगा आई कैन गारंटी कि वो आसानी से चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे. Which of the following condition must met for shareholders to receive additional dividend beyond the fixed rate at a participating preference shares? ठीक है, तो हमने समझा था अभी participating preference shares में क्या होता है, like as I gave you कि जैसे XYZ कंपनी दे कम अप विद द डिविडेंड्स. ठीक है, उन्होंने बोला प्रेफरेंस शेयर्स आपका कि हम आपको प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं. ठीक है, जहां पे वी विल शेयर 8% ऑफ आवर प्रॉफिट. ठीक है, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उसका 8% वी विल share among these preference shareholders. ठीक है, now they come up with one additional things, जैसे इंश्योरेंस में राइडर हम लोग बोलते हैं ना, वैसे कि if our profit is greater than 10 crores we will pay you 2% additional dividend. ठीक है, but for that sake
पर शेयर पर डिविडेंड शेयर यू हैव टू पे अस 1000 एडिशनल आपका, ठीक है। इसके लिए जैसे सपोज दैट इट वाज 5000, एक प्रेफरेंस शेयर का कीमत 5000 रुपए रखा था फॉर दिस कंडीशन। अब उन्होंने कंडीशन दिया कि अगर हमारा प्रॉफिट 10 करोड़ से ज्यादा होगा वी विल पे यू 2% एडिशनल डिविडेंड, बट फॉर दैट वन पर शेयर यू हैव टू पे अस 1000 एडिशनल। तो दिस इज जनरली नोन एज पार्टिसिपेटिंग। आप देखो दो तरीके के इन्वेस्टर होंगे, वन हु विल एंटर इन दिस पर्टिकुलर वन ओनली, नॉन पार्टिसिपेटिंग, another one who is participating in the both the deal, that is known as participating. The company must decide the issue of bonds, the company profit must exceed a certain predetermined level, ठीक है। तो B will be right answer, ये आपका, this is the predetermined level in our case, understood, समझ में आ गया सबको, ठीक है, बहुत आसान था, ठीक है। Participating preference shareholders receive dividend at a fixed rate but are also entitled to an extra share of the profit if company earn above a specific threshold, right? This make them distinct from non-participating preference shareholders who only receive the fix, जो आपके 8% वाले थे। ऑनलाइन क्लियर है गाइस, ठीक है, समझ में आ रहा है, यस और नो, प्लीज कुछ कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है। चलो, कमर्शियल पेपर आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर अ मिनिमम 7 days, maximum 1 year, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आई केप्ट दिस क्वेश्चन हियर, ठीक है। तो आसान है, 7 days और 1 year, ये हमने डिस्कस भी किया है। कमर्शियल पेपर लास्ट यूनिट वाज ऑल अराउंड दी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल। अच्छा हाँ, यहाँ पे था ये, राइट नाउ आई रिकॉल दिस वन, ठीक है। कैपिटल मार्केट के अंदर दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर थिंग्स एंड ऑल, यहाँ पे कहीं पे तो होगा, यस, कमर्शियल पेपर। सो वी हैव डिस्कस लाइक आपका कूपन बॉन्ड्स मींस बॉन्ड्स विद इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कूपन इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट लाइक वी हैव कैश मैनेजमेंट बिल्स, ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल, ठीक है, दे जनरली गेट इशूड ऑन डिस्काउंट बेसिस, ठीक है। तो जहाँ पे फेस वैल्यू पे उनको डिस्काउंट में इशू किया जाता है, दो वी विल डिस्कस दीज पर्टिकुलर वन इन डिटेल वंस विल कम टू आवर नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज पर्टिकुलर वन, ऑलराइट, नेक्स्ट वन, what are the correct allotment priorities for different categories of investor in a compulsory book building, ठीक है। so it is not ordinary, it is compulsory book building, ठीक, बहुत ही important, very very important question, ठीक है। so what classification we have, QIBs in case of compulsory book building issue, we can go like the QIB are the maximum side, ठीक है। so they are like at least 75%, ठीक है। so then we have NII, ठीक है, 15%, not more than 15%, and retail individual investors not more than 10%, ठीक है। तो हाँ, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, वेरी प्लीज पे योर अटेंशन गाइस, QIBs at least 75%, NIIs not more than 15%, आपका RIIs आपका not more than 10%. It is a case of compulsory, ठीक है। In normal case it is like for retail investor आपका that entire game will change. I'll show you this particular one, ठीक है। So QIB in case of compulsory book building issue, the proportion of allotment shall be under QIBs at least 75% of net offer to the public, ठीक है। Failing which full subscription money is to be refunded, ठीक है। अगर आप 75% नहीं पहुंचोगे so you have to refund that particular money, ठीक है। NII is not more than 10% and RII is not more than 10 आपका 15% and 10%, ठीक है। So guys, this is very very important. अब इससे पहले ना I want to show you the general one, ठीक है। So in case of the voluntary process, ठीक है, so in 100% net offer to public through voluntary book building process, ठीक है, usually we have this one, voluntary book building process. So allotment to different categories of investors are required to ensure the following proportion, ठीक है। Retail individual investor, they have the maximum, like not less than आपका sorry, they have not less than 35%, not less than 35%, it can go beyond like 70%, 80% also, ठीक है। So of the net public offer, NII आपका, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नॉट लेस देन 15%, ठीक है, नॉट लेस देन 15%, सॉरी इट इज ऑल्सो द सेम थिंग, ठीक है। सो लाइक इट कैन बी गो, दैट मीन्स this can go up to 85% because it is mandatory आपका 15% होना चाहिए, ठीक है। तो 85 plus 15 it can be 100% also, यहाँ से भी हो सकता है। QIBs not, यहाँ पे क्या है, not more than 50%, ठीक है, मतलब ये इसका आपका, ठीक है, 5% of which should go to mutual funds as well, ठीक है। तो ये like this is the
बेसिक आपका ठीक है वॉल्यूंटरी बुक बिल्डिंग in case of voluntary book building ठीक है so it is a case of IPO when companies they come up with IPO ठीक है तो जब वो अपना कहीं ना कहीं while they are issuing their shares to the public and when it went to the subscription ठीक है तो this should be followed ठीक है 35% for retail downside ठीक है देन आपका डाउनसाइड NII नेशनल सॉरी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपका डाउनसाइड 15% एंड QIBs मैक्सिमम आपका 50% ठीक है जिसमें से भी आपका 5% विच शुड गो टू द म्यूचुअल फंड बट इन केस इफ यू कंपेयर दिस पर्टिकुलर वन विद द आपका कंपल्सरी बुक बिल्डिंग इशू द प्रोपोर्शन अलॉटमेंट शैल बी अंडर QIB आपका QIB 75% एटलीस्ट 75% ऑफ द net offer to the public ठीक है NII not more than 15% of the net offer to the public RII not more than 10% of this ठीक है अब एक और चीज आपका in case of fixed price issue ठीक है fixed price issue you'll definitely get one question based on this ठीक है तो तीन एरियाज आपके पास हैं बुक बिल्डिंग आपका कंपलसरी फिक्स और आपका ऑर्डिनरी ठीक है so a minimum 50% of net offer securities public shall made to the आपका RIIs ठीक है second case is balance net offer of securities to the public shall made available to individual application other than RIIs and other investors including corporate bodies institution irrespective of the numbers of securities applied for right तीसरा आपका हमारे पास था दैट इज वॉल्यूंटरी बुक बिल्डिंग साइट ठीक है तो ये क्वेश्चन और ये तीनों ही जो एरियाज हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हमने इनको डिस्कस किया है आपका कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर बट दिस साउंड वेरी इंटरेस्टिंग सो आई विल कम अप विद वन डेडिकेटेड वीडियो ठीक है जहां पे ना आई विल एक्सप्लेन एवरी एरिया और डेस्टिनेशन विद सम एग्जांपल्स आल्सो ठीक है सो रिटेल अब एक कुछ देयर आर सर्टेन अदर गाइडलाइंस आल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस ठीक है प्लीज पे योर अटेंशन सो रिटेल इन्वेस्टर्स आपका मीन्स एन इन्वेस्टर हु अप्लाई और बिड फॉर अ सिक्योरिटी ऑफ और फॉर अ वैल्यू नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज ठीक है एज अ रिटेल इन्वेस्टर हाउ मच वी कैन इन्वेस्ट इन एन IPO सो इट इज 2 लाख रुपीज और लेस देन दैट ठीक है दूसरा आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हु perceive to possess expertise and the financial strength to evaluate and invest in capital market SEBI have specific certain categories of investor which are considered as QIB for example like this mutual funds हैं banks हैं या others ठीक है non institutional investors आपका an investor other than QIB or RII retail individual investors and qualified institutional buyers typically the category include high net worth individual HNIs or corporate bodies ठीक है एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं आपके एंकर इन्वेस्टर्स ठीक है छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो आपके होते हैं ठीक है मींस अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हु मेक एन एप्लीकेशन सॉरी हाँ फॉर अ वैल्यू लीस्ट 10 crore rupees ठीक है in a public issue on the main board made through the book building process in the acha that was angel investors ठीक है I just missed this one anchor investors are the primary investors ठीक है qualified institutional buyers whose a bid is more than 10 lakh 10 lakh and above ठीक है on the main board made through the book building process in accordance with these regulation or make application for a value of at least 2 crore rupees for an issue made in accordance with chapter 4 of these particular regulations ठीक है तो ये देखो गाइडलाइंस हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस ठीक है प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस वन ठीक है और आई हमारे पास और क्वेश्चन भी होंगे अगर नहीं होंगे for sure I'll come up with one dedicated area video as well as some practice question ठीक है because you can expect 1 marks or 2 marks question based on those particular guidelines चलो अगला क्वेश्चन आपका which of the following statement regarding IPO eligibility condition and NSE listing criteria are correct very interesting question again so an entity must have net tangible asset at 3 crores in each preceding 3 years of full ठीक है करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है ठीक है करेक्ट पूछा है तो पहला करेक्ट है ठीक है नो मोर देन 75% ऑफ नेट टेंजिबल एसेट कैन बी हेल्ड in monetary asset unless IPO entirely have been sale ठीक है the issuer
आपका the issuer should have an average operating profit at least 15 crores during the preceding years. No, this is wrong. ठीक है. आप it is not 15 crore, it is less than that. ठीक है. The issuer must have a net worth of at least 5 crores during the preceding years. It is 1 crore. It is 1 crore. So this is also wrong. If the issuer does not meet financial condition, at least 75% of net of offer must be allotted to QIBs through the book building process. This is correct. The post issue paid up equity capital applicant must be at 10 crores as per NSE listing category. This is also correct. सो हाँ, हमारे पास क्या है स्टेटमेंट्स आपका जो इनकरेक्ट है. ठीक है. 1 2 3 5 6 1 3. अच्छा, ओके. अच्छा, वी हैव टू चेक दिस आंसर. हाँ, आई एम लिटिल बिट डाउटफुल अबाउट दिस. ठीक है. देयर आर टू स्टेटमेंट इनकरेक्ट, 2 and 4. ठीक है, 2 and 4. हाँ, 2. अच्छा, ओके. 2 इज, अच्छा, 2 क्यों इनकरेक्ट है? इट इज 50%. सॉरी गाइज. ठीक है. ये बहुत मतलब दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स विच विल कंफ्यूज यू ऑल्सो आपका एग्जामिनेशंस के अंदर. ठीक है. रेस्ट आई गेस सारे सही थे. ठीक है. तो आपका इट इज 50%. 50%. प्लीज गो थ्रू दिस वन. द इशूअर हैव एवरेज 2 and 4 ओनली इनकरेक्ट. हाँ, बिल्कुल 2 and 4 आपका. ठीक है. सो मिनिमम टेंजिबल एसेट मस्ट बी 3 crores in each last 3 years. Limit is 50%. That means आपका not more than 50% of net tangible asset can be held in monetary asset unless the IPO is entirely an offer. Then we have fourth statement. The required net worth is 1 crore, not 5 crores. So this is 1 crore आपका. ठीक है. हाँ, this was right ना, हमने सही किया था इसको. 1 crores आपका. ठीक है. So this is, so these two statements are wrong. ठीक है. Sorry. So these two statements are wrong. Then rest are आपका. तो 1 3 5 6 1 3 5 6 1 3 5 6. ठीक है. So D will be right answer for this particular one. बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस. प्लीज ध्यान रखिएगा, गाइडलाइंस को पढ़ें समझें. ठीक है. और कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं, सो प्लीज ध्यान रखें. इफ अ फाइनेंशियल कंडीशन नॉट मेट, इशूअर अलॉट 75% एंड NSE रिक्वायर्ड दिस आल्सो. राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. Retail investor, individual investor means an investor who apply for bid for securities of value dash. कितना होता है आपका? 2 लाख रुपीस. अभी हमने डिस्कस किया, आसान है. टीम. सो रिटेल इन्वेस्टर आपका 2 लाख रुपीस, और ये जो कंडीशंस है दैट वी हैव गॉन थ्रू. टीम. नेक्स्ट वन. XYZ Limited planning to raise funds through an IPO using book building process. The IPO has appointed ABC as a merchant bankers, SEBI registered merchant bankers as the book running lead managers to ensure investor protection. तो book running lead managers और this merchant bankers, जैसे हम लोग आपका एज अ बैंक काम करते हैं. इट इज लाइक कि इफ इन केस, एक तो द फंड रेजिंग विल बी, जो भी इन्वेस्टर है वो आपके थ्रू आपका इन्वेस्ट करेंगे. दूसरा, इफ इन केस आपका इफ आर IPO went under subscribe, तो this remaining portion will be acquired by that particular company. ठीक है. So to ensure investor protection, the company decide to offer a safety net which allow in original resident individual allottee to sell back up to 1000 shares per allottee within 6 months from the date of the dispatch of securities. Additionally, मतलब this is completely true. हाँ, ध्यान रखें इसको. Additionally, the company set price band in red herring prospect built, but has not disclosed the the final issue price. So red herring prospect के दौरान आपका, like when it comes to prospect, it is a kind of advertisement documents. ठीक है, कि we are coming with this IPO. The initial date will be this. This is the closing date. This is the floor price. This is the upper price. ठीक है. And these are the merchant bankers जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो everything, like what will be the proceed of that particular money. So ये सारी चीज आपका. In your previous exam there was one question about the red herring prospect itself. Okay. So disclose this. What is the term used for final price at which
आपका सी दिस प्राइस बैंड क्या होता है आपका, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइसेस, ठीक है. व्हाट कंपनीज मैनेजमेंट विल डू, कंपनी मैनेजमेंट डिसाइड दिस पर्टिकुलर वन कि दिस इज आवर फ्लोर प्राइस, ठीक है. लेट्स से फ्लोर प्राइस इज 100 रुपीज एंड दिस इज आवर अपर प्राइस, ठीक है. अपर प्राइस विल बी मैक्सिमम 120 because as per SEBI norms, ठीक है, your upper price can be maximum 20% above of your फ्लोर प्राइस, ठीक. तो उन्होंने आपको एक फ्लोर प्राइस दे दिया कि आपकी जो बिडिंग होगी दैट विल बी विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज आपका, ठीक है, 100 से लेके 120 के बीच में. देयर आर सम इन्वेस्टर हु आर एक्स्ट्रा बुलिश ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी, दे विल मार्क फॉर 120. देयर आर सम मॉडरेट जिनको लगता है कि अगर मिल गया ठीक है 110 में, तो दे हैव देयर ओन वैल्यूएशन. देयर आर सम इन्वेस्टर हु विल बिड फॉर 100 रुपीज, ठीक है, उनको लगता है कि कंपनी अच्छी है बट द प्राइस शुड बी 100 रुपीज. तो वो इस तरीके से जो बिडिंग आपकी होगी, वाइल इन्वेस्टर दे विल फाइल देयर एप्लीकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर आईपीओ, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर फाइनल प्राइस एट विच शेयर आर अलॉटेड इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, सो इट इज जनरली नोन एज कट ऑफ प्राइस, ठीक है. इसको हम किस नाम से जानते हैं आपका, इट इज कॉल्ड कट ऑफ प्राइस, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लर्निंग्स के लिए हैं, तो प्लीज ध्यान रखें. सो इन बुक बिल्डिंग इशू द इश्यूअर सेट प्राइस बैंड or floor price as we said 100 rupees in the red herring prospect. The final discovered issue is determined based on the investor demand and called out the cutoff price. Only retail investors are allowed to apply at the cutoff price. ठीक है. तो ये जब जैसे क्या होता है ना, आप कभी किसी कंपनी का लिस्टिंग प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, तो जैसे उसका आईपीओ क्लोज हुआ, पहले दिन उसका स्टॉक मार्केट के अंदर जब ओपनिंग होती है, सो वहां पे ना इनिशियली यूजुअली वी हैव सम आपका एक देयर इज वन टर्मिनोलॉजी आई मिस दैट पर्टिकुलर वन कि सर्किट आपका, ठीक है, दैट इज जनरली नोन एज सर्किट, कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे आ सकता है. 20% इज द हायर सर्किट, ठीक है. मतलब जैसे 10% अगर ऊपर गया तो एक सर्किट लगेगा, ट्रेडिंग विल हॉल्ट फॉर हाफ एन आवर. देन आपका 15% पे दूसरा सर्किट 2 आवर्स. अगर 20% ऊपर या नीचे आ गया, सो देन उस दिन उसमें आपका ट्रेडिंग नहीं होगा, ठीक है. दिस हैपन इन जनरल आपका सिनेरियो. बट जब किसी कंपनी का शेयर आपका फर्स्ट टाइम आ रहा होता है, डे वन ट्रेडिंग, दैट इज अ काइंड ऑफ ओपन थिंग, तो इन्वेस्टर दे जनरली मेक देयर बाय सेल इन दैट पर्टिकुलर ओपन मार्केट, ठीक है. तो जहां पे वी कम टू द कट ऑफ प्राइस एंड ऑल, राइट. So this is very very important one. ठीक है. So first one is what draft of red herring prospect. Yeah, there was one question based on this draft only. So draft is ये हमने AFM में भी पढ़ा, ठीक है. The entire IPO has 3 major stages. ठीक है. One is your prospectus, that is this one. ठीक है. Prospectus is kind of कि it is a sort of advertisement document. ठीक है. जैसे कोई XYZ, let's assume कि XYZ कंपनी दे आर कमिंग विद देयर आईपीओ, ठीक है, ये अपना आईपीओ के लिए आ रहे हैं, ठीक है. सो फर्स्ट दे हैव टू एडवर्टाइज इट, ठीक है, मतलब उनको बताना पड़ेगा ना इन्वेस्टर्स को, जो भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, कि वी आर कमिंग विद आईपीओ एंड दिस इज आवर ओपनिंग डेट, दिस इज आवर क्लोजिंग डेट, दिस इज आवर फ्लोर प्राइस, ठीक है, एंड this will be the proceed of the money, this is our company's board. So required information, ठीक है, कि जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करे, these are the merchant banks जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, that is generally known as your prospectus, ठीक है. So first, then second stage is then that actually date comes, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन आपका, where investor will apply for the one, and then finally after the closure of IPO allotment will happen and it happen on pro rata ground, ठीक है. तीनों स्टेजेस मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा, ठीक है. हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था और हमने उनको आपका AFM में भी डिस्कस किया था. अब दोबारा से थोड़ा सा जल्दी से इनको देखते हैं, ठीक है. सो ड्राफ्ट अ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट और ऑफर डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड बाय कंपनी to SEBI, ठीक है, Securities and Exchange Board of India, when it intend to raise money from public by selling shares to the company investors. The document is very useful to investor because it provide detailed information about the company's business operation, financial, promoters, and the company objective for raising funds and all. It elaborate on how the company intend to use money that will be raised and the possible risk for the investors, ठीक है. तो फर्स्ट वन इज ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट. दिस इज द वेरी फर्स्ट जर्नी, ठीक है. लाइक इफ यू वांट टू रेज मनी और इफ यू वांट टू बीइंग पब्लिक, आप अपनी कंपनी को पब्लिक करना चाहते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट द फॉरमोस्ट थिंग इज लाइक यू हैव टू अप्लाई with our SEBI, and SEBI
like there are certain guidelines. If you met with those particular guidelines, SEBI will approve your application, ठीक है, तो उसी के बाद आप अपना IPO लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो prospectus है, it is a kind of we can say advertisement document, ठीक है। अब इसमें कंटेंट आपका क्या क्या होता है इसमें, जैसे आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन, अपने कंपनी के बारे में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, व्हाट इज आवर प्राइमरी एक्सपर्टीज एंड ऑल, ठीक है। द सेगमेंट लाइक बिजनेस कोर ऑपरेशंस, how they conduct business, prospective shareholders should pay attention to this particular part and not. Financial information, how our business is doing last 3 years, especially, ठीक है। तो one of the most important segment and contain company audit reports and financial segments, ठीक है। An investor, the financial statement will help them to get an idea for future dividends and all these things, ठीक है। Risk factors, आपका companies list out the risk potential, ठीक है। अगर लाइक होता है ना इक्विटीज इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड ऑल, ठीक है। यूज ऑफ प्रोसीड, like let's say if a company raising 5,000 crores, so where they are going to use that particular money, that is proceed, ठीक है। so use of proceed is kind of जो आप लोग से हम लोग जो पैसा आपका रेज करें, where we are going to spend that particular money, ठीक है। and industry overview also, so these are some information which are generally जो हमारे आपका प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स में रहेंगे। एंड देयर वाज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन इन योर रिसेंट एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इस बार इस पे था, वो पिछले IPO अलॉटमेंट पे हो सकता है, अदर्स पे हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। To be eligible for an IPO, a company must have an average operating profit of at least 15 crores over the preceding 3 years. What is the additional net worth required? ठीक है, तो क्या additional net worth था आपका? At least 5 crore over past 3 years, at least 1 crore of preceding 3 years, 1 crore, 1 crore in preceding 3 years will be right answer. अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, ठीक है। So company must show average operating profit of 15 crore rupees and maintain a minimum net worth of 1 crore rupees over past 3 years to qualify for an IPO, ठीक है। This is as per the SEBI guidelines and all, ठीक है। अभी हमने देखे भी थे, तो अब यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर मेकिंग एन IPO, ठीक है, ये इस बार का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। जिस भी आप बार में जा रहे हो, ये आपका क्वेश्चन है इस बार का, तो प्लीज पे योर अटेंशन रिगार्डिंग दीज 3 लाइन्स। Required a net tangible asset of at least 3 crores rupees in each preceding 3 years, full years, of which not more than 50% are held in monetary asset. However, the limit of 50% on monetary assets shall not be applicable in case of IPO is made entirely through an offer for sale, ठीक है। Issuer should have average operating profit at least 15 crores and a net worth of at least 1 crore rupee during the preceding 3 years. In case, ये याद रखना 3 years आपका पूरा हिसाब किताब 3 साल का रखा जाता है, और in case of above condition are not fulfilled, then an issuer can bring IPO only if the issue is made through the book building process and the issuer undertake to allot 75% of the net offer to qualified institutional buyers. It is through the आपका book building process. तो book building process में what was the QIB? QIB आपका not less than 75%, ठीक है, and retail are not more than 10%. आपका the DIIs are not more than 15%. So this is the one, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन मीट नहीं होती हैं, देन यू हैव दिस ऑप्शन, जिसके थ्रू भी आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। सो एज पर द एक्सटेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ लिस्टिंग of equity with National Stock Exchange for initial public offering, the post-issue paid-up equity capital of applicant shall not be less than 10 crores and the capitalization of the applicant equity shall not less than 25 crores, ठीक है। आप मान लो इस बार का क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ठीक है। सो वी हैव प्रैक्टिस अराउंड 2 और 3 क्वेश्चन, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था वो भी इसी पे था आपका, या अदर्स आपके, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। A company seeking to launch an IPO must have net tangible asset of at least 3 crores in each of the preceding years. However, what condition apply regarding the monetary asset? तो कितना था? 50%. अब याद हो रहा होगा ना, not more than 50% of tangible assets should be in monetary form unless IPO is entirely on
ऑफर फॉर सेल। अंडरस्टूड? ठीक है, पहला क्लियर हो गया। तो बी अभी हमने जैसे कुछ देर पहले इसको आपका डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, in if a company does not meet the standard eligibility condition for IPO, how can still an IPO to the market? तो कैसे ला सकते हैं? तो लास्ट वाली जो कंडीशंस हमने समझी थी, by offering a fixed price IPO, no, बुक बिल्डिंग के थ्रू हम जाएंगे। ठीक है, बाय ऑप्टिंग बुक बिल्डिंग एंड अलॉटिंग at least 75% of net offers to qualified institutional buyers, right? समझ में आया सबको? और आपका for DIs it is not more than 15%, for RIs it should not more than 10%। क्लियर है? इस तरीके से आप ध्यान रखोगे तो चीजें याद होंगी। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस होगी। आगे बढ़ते हैं। In the context of capital market, what does ESBA stand for? ठीक है, application supported by blocked amount। ठीक है, so application supported by blocked amount, ESBA it get introduced by SEBI in 2010 itself। ठीक है, तो SEBI के द्वारा इसको आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 के अंदर, and it is like it is an application form for IPO, FPO and NFO। ठीक है, उससे पहले आपका एक there was one era that is known as IPO scam। ठीक है, एक तो आईपीओ का टाइम ड्यूरेशन वाज लाइक फॉर 45 डेज। आज के डेट में विद इन 7 डेज सब कुछ सेटल हो जाता है, अलॉटमेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, सो उस समय क्या था, लाइक आपका जैसे एज ए इन्वेस्टर, लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज, वो 2 लाख रुपीज डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था 45 डेज के लिए 2 लाख, और ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कंपनीज के पास वो उसको री इन्वेस्ट करते थे, रीपेमेंट में इशू होता था। तो देयर वाज लॉट्स ऑफ सेटबैक इन दैट पर्टिकुलर वन। सो व्हाट सेबी डिड, सेबी कम अप विद दिस पर्टिकुलर फॉर्म, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा इसको। ठीक है, सो ब्लॉक्ड अमाउंट, सो नाउ इट इज व्हाट हैपन, जैसे एज एन इन्वेस्टर इफ यू विल इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज, सो दैट 2 लाख रुपीज विल ब्लॉक्ड इन योर अकाउंट ओनली। ठीक है, अब फ्रीज हो जाएगा ना, आप उसको यूज कर सकते हैं ना ही आपका मतलब उसको आप कंपनी के पास हम उसको भेजें। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इफ यू गेट शेयर, सो सेटलमेंट, जब भी हम लोग यूज वर्ड करते हैं सेटलमेंट, सेटलमेंट इज लाइक बोथ द अकाउंट विल गेट अफेक्टेड एट सेम टाइम। यू विल गेट योर डीमेट, यू विल गेट शेयर्स इन योर डीमेट अकाउंट एंड दैट मनी विल गेट ट्रांसफर टू दी आपका कंपनी इटसेल्फ। ठीक है, तो अब दूसरा, अगर शेयर नहीं मिलते हैं दैट फ्रीज विल बी अनफ्रीज। ठीक है, तो आप उनको यूज कर सकते, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ESBA means application supported by blocked amount। ESBA in application counting and authorization to book block application money, block application money in the bank account for subscribing to an issue. If an investor applying through ESBA, the application money shall be debited from the bank account only if his or her application is selected after the basis of allotment is finalized or the issue of withdrawal failed. Right, so this is the one. So SEBI has specifying the investor who can apply through the ESBA in case public issue with effective from May 1st 2010, all the investors should apply through the ESBA application only। ठीक है, तो आज सिर्फ और सिर्फ इसी से होता है। In a right issue, all shareholders of the company as on record date were permitted to use ESBA for making application provided the application shareholders। ठीक है, जैसे आपका is shareholders dematerialized form and applied for the elements or additional share has no written renounce his or her entitlements in full or part। In case of right issue, we do have that right, we can share those particular shares or we can entitle those particular shares in our blood relation। okay? That's why this statement, it is not re-announced or is applying through blocking of funds in bank account with self certified syndicated banks। ठीक है, so that is the one। so these are certain guidelines। ठीक है, advantages of applying through ESBA, this can be a question again, very important। देखो, जो मतलब हमेशा ना मॉड्यूल बेस्ड एग्जाम जितने भी होते हैं, ठीक है, मॉडल बेस्ड एग्जाम जितने भी होते हैं, वहां पे जो चीजें ना एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा होती हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर डे टू डे बिजनेस। ठीक है, हम बैंकिंग में आपका यूज करते हैं, हम वी सेल डीमेट अकाउंट्स क्रॉस एज अ आपका थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, तो ये ऐसे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द इन्वेस्टर नीड नॉट टू पे एप्लीकेशन मनी बाय चेक रादर देन इन्वेस्टर सबमिट ESBA which accompanies an authorization to block bank accounts to extent of the application money in investors own account। ठीक है, यहाँ पे investor does not have to bother about the refund stream। ESBA only
that much money is extent required for allotment of securities is taken from the bank account, that too only when his application is selected for allotment. ठीक है? The investor continue to earn interest. हाँ, this is the very important point है. ठीक है? तो जैसे let's say I invested 1,50,000 in XYZ company. ठीक है? एंड अब जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए भी है वो पैसा मेरे अकाउंट में ब्लॉक होगा. ठीक है? एंड आई विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है? दिस इज द मेजर थिंग्स. पहले कंपनीज इस पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते थे. ठीक है? द एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरी सिंपल. द इन्वेस्टर डील विद नो इमीडिएटली his or her accounts. ठीक है? So these are some advantages or benefits of SBA application. चलो अगला क्वेश्चन. QIP was the last topic of your unit, so hopefully this is the last question. ठीक है? Which of the following statement about qualified institutional placements are correct? QIP allow listed companies to issue equity shares, fully and partly convertible debentures or this. QIP is a faster method of raising capital as this does not require pre-issue filing with SEBI. The primary objective of introducing QIP was reduce the resilience of Indian companies on foreign capital. The issue under QIP is open to both retail and QIPs. QIP issue must be managed by SEBI registered merchant bankers. ठीक है? तो इस केस में आपका डी 3 क्वालिफाइड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. हाँ ओके, विल चेक दिस वन. हाँ ठीक है, इसमें कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं दैट आई वांट टू कंफर्म. ठीक है? अच्छा, बी इज द राइट आंसर. एक्चुअली बी मींस आपका कौन कौन से सही है, दूसरा, तीसरा एंड पांचवा. ठीक है? सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. QIP allow issuing equity shares, fully and partly convertible debentures or any securities other than warrant. ठीक है? So आपका equity this is or any security including warrants आपका लिखा था. So this statement is wrong first. Second one is correct. ठीक है? So faster process, this is the correct. ठीक है? Statement 3 आपका QIP was introduced to reduce dependence on foreign capital. This was also correct. Yeah. Statement 4 was incorrect. QIP is only for QIPs and not for retail investor. ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा था? This QIP open for both. नहीं, only retail investors, not for retail investor, only for QIBs, qualified institutional buyers. ठीक है? And fifth, QIP issue must be managed by SEBI registered merchant bankers. That was correct आपका. ठीक है? तो these are some major statements around the QIPs. So एक बार देख लेते हैं. SEBI instituted guidelines for qualified institutional placements, relatively a new Indian financing avenue on May 8th, 2006. QIP is a capital raising tool whereby a listed company can raise equity shares, fully and partially convertible debentures, or a security other than warrants, which are convertible into equity shares to qualified institutional buyers. Apart from the preferential allotments, this is only other speedy method of private placement for companies to raise money. It score over other methods as does not involve many common prudential requirements such as submission of pre-issue filings to the market regulators. All right, तो बहुत important था, ध्यान रखें. ठीक है? A company plan to raise funds by offering shares to select investors rather than the general public. So which market does this transaction will take place? ठीक है? तो general public के लिए नहीं है, तो private placement will be the right answer. ठीक है? So private placement will be the right answer in this particular case. ठीक है? So private placement is a method where companies sell securities directly to small group of select investors rather than offering them to the general public. This is distinct from the जैसे normal में आपका होता है कि like यार it is open to all, but यहाँ पे it is to a closed group आपका, and it is not through the आपका exchanges and all. Which of the following is not a characteristic of capital market? It facilitates long-term funding. It includes both the stock and bond market. It only deal with equity shares. ठीक है? आपका it is registered by SEBI. तो C आपका which is incorrect statement correct है. ठीक है? आगे, which of the following share entitle its holders to receive a fixed
डिविडेंड इन एडिशनल अर्निंग अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, पार्टिसिपेटिंग आपके हो जाएंगे, ठीक है। इट्स अ स्मॉल प्रैक्टिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। Which of the following type of shares ensure that unpaid dividend from previous years are accumulated and paid later? आपका कौन से टाइप होगा? Cumulative preference shares. So cumulative preference shares. Next one. In which type of market an investor purchase a security from another secondary market हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आपके शॉर्ट रिविजन्स के लिए जो आपके रखे हैं, जिनको ध्यान रख सकते हैं। Why might a company issue redeemable preference shares? Redeemable means buyback. So it is kind of a in future if they want to increase their degree of control holding, to offer permanent equity, no, to have flexibility to repurchase shares within a specified period. Option B will be right answer. Next one. Okay, this is it. So this is our unit number 31, which is all around the capital market and your आपका stock exchanges in India, ठीक है। So I hope you found this particular discussion healthy, ठीक है। So बहुत सारी चीजें हैं इसमें आपका करने के लिए, समझने के लिए, and very interesting market also, ठीक है। So please do watch that concept video also, तो वो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा help करेगा। Though I'm including the concept, the core concept of from that particular one as well. Reason being, like कई बार मतलब like while you watch during the exam months, if you'll go through the only with the help of these particular videos, तो आपका साथ साथ में आपका revision होगा, and even I'll share this particular one PDF form में भी, तो I'll do the compilation things and I'll provide this, ठीक है। So as I said earlier कि this is आपका IE and IFS, it is a time taking subject, और यू हैव टू बिल्ड दैट पेशेंस, ठीक है। दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। रेस्ट कंटेंट साइड आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब लाइक एवरीथिंग्स वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टॉपिक और देयर सब टॉपिक्स एंड ऑल, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको आप देख भी रहे होंगे, 2 दिन 3 दिन से हमने आपका बैक टू बैक जो सेशन किए हैं, एंड इट इज ऑन एन एवरेज 1 hour एंड इट विल हैपन विद दिस वन, ठीक है। सो अदर सब्जेक्ट में इट इज मैनेजेबल विद इन 40 minutes or 35 minutes or less than 1 hour, but here it is like we need a detailed solution, we need a thorough study, and we will not take any chance in this subject because see, this is our very first subject। एक तो यहाँ से आपका मोरल या तो बढ़ेगा या फिर आपका जमीन पाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि वो जमीन पाए, वो बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो जाए तो कहीं ना कहीं और अच्छे आंसर्स भी आपका करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम आई वॉज एट सेंटर, तो कुछ बैंकर बोलते सर ये तो मतलब हमारा जो IBPS का एग्जाम था उससे भी टफ लगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं हुआ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आपका रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। अगर इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, जस्ट डू कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम, तो यहाँ पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं एंड आई विल डू माय बेस्ट इन माय कैपेसिटीज, ऑलराइट। तो कल मिलते हैं आपका विद यूनिट नंबर 32। डू नॉट मिस, ठीक है, एवरी डे आपका, ठीक है। शेड्यूल बनाइए उसी तरीके से, क्योंकि मैं देखो मैं आपको चारों सब्जेक्ट नहीं लेके जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। 1-1 करके AFM पूरा कर लिया है, आप अपने बैकलॉग पूरा कीजिए। अगर आपने पूरा कर दिया तो दैट इज वेल एंड गुड। देन आपका IN IFS 15 मार्च का टारगेट है, ठीक है। देन आपका वी विल इन 15 days वी विल डू RBWM का 100%, देन आपका PPB प्लस IN IFS का रिविजन। इस तरीके से लेके चलेंगे तो एग्जाम में आप बहुत बढ़िया एकदम मचाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, and please do like and do share with your friends also, okay? So bye bye, have a nice day, thank you.